हफ्ता भर काम करने के थकान के बाद पहली बार मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं खुली हवा में सांस ले रही हूँ। देख रहे हो आप, इतनी ग्रीनरी, इतना खुला आसमान और खूबसूरत हवा आप महसूस कर रहे हो। इतनी खूबसूरत जगह है ये। चलो मैं आपको सैर कराती हूँ हंस किला की। बहुत खुश हूँ यहाँ आके। आप सबका तो पता नहीं, लेकिन आई एम गोइंग टू शिफ्ट हियर इन नो टाइम। वाओ। Myself is Mr. Hans. I am the owner of the Hans Villa. My wife, Srimati Rajkumari Hans, the owner of the Hans Villa, and she has supported me lots in these plots. I came here and I thought that I must buy some land here to do something good for the people. 2012 में मैं यहाँ पे एक पिक्चर की शूटिंग करने आया था, गंगा देवी, जो भोजपुरी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन जी, जय बहादुरी, दिनेश कुमार नरूवा और भूषण ग्रोवर जी ने काम किया था। जब मैं इस जगह को देखा तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि मुझे यहाँ ज़मीन खरीद के कुछ करना चाहिए। ये मेरा क्लब हाउस है जो 25,000 स्क्वायर फुट में क्लब हाउस बनाया, जिसमें 7 गेस्ट रूम है, स्विमिंग पूल है, जिम है, और इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पार्टी हॉल है, और ऊपर में 4,000 स्क्वायर फुट का हमने टेरेस बनाया है, जिसपे आप शादी भी कर सकते हो, कोई अपनी बड़ी पार्टी भी कर सकते हो, न्यू ईयर की पार्टी कर सकते हो, फिल्म की शूटिंग कर सकते हो। और मैं ये चाहता हूँ कि लोग यहाँ आएँ। 42 बंगला है हमारे पास, सिर्फ अभी 35 बंगले बैलेंस है। 2 बेडरूम के हैं और 3 बेडरूम के बंगले हैं, जो हम फर्निश करके आपको एकदम दूसरे लोगों से आपको ज़्यादा बेनिफिट और फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम पूरा हंस किला घूम चुके हैं एंड आई एम रियली फीलिंग एनर्जेटिक एंड ऑसम। सो आई जस्ट वांट टू आस्क द विजिटर्स आल्सो ओवर हियर, जिन्होंने हंस किला को विजिट किया है, कि उनका हंस किला के बारे में क्या कहना है। Myself is Lion City owner. See, all the villas are of different design and they have been fully furnished. You just have to come and occupy with your clothes only. So if you sit in the balcony or in the main hall or wherever you sit in the villa, lot of greenery surrounded by rocky hills and river flowing side by side. It is so lovely, so beautiful, amazing, and it is beyond the description.
आप देख रहे हो, ये करीबन 42 बंगलोज का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें से 7 बंगलोज ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और कुछ बंगलोज की बुकिंग हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पे प्लिंथिंग हो चुकी है ऑलरेडी एंड इट इज़ ऑल सेट टू रेज। एंड यू नो दिस बंगलोज हैव such a strong foundation and like it is like if you pay them it is going to be ready by another next 4 months. This is the most easiest option to have your own house in such a beautiful place. Namaste, I am Jyoti Nayak here, ex-principal and director of school in Mumbai. Very, very happy to have a very, very positive vibration and the total beautiful natural surrounding over here. The accommodation and the facilities provided by the landlord is very wonderful. Architect is wonderful. The facilities are given there are very nice. It is like a dream house over here. I also desire to be book, and I pray God that this type of surroundings and piece of land near, very very near to Mumbai is possible to have a heaven on earth. मेरा नाम विकेश सखानी है। मैं इधर बोरियली में रहता हूँ। मेरे दोस्त चेतन भाई ने इधर लाया और मैं देखा सब विला सब मेरे को मजा आया। પણ આ બોમ્બેની ભાગદોડ ને આ તેને બધું બહુ માનસિક ત્રાસ છે, પણ અમે જગ્યા જોઈ ને હંસ વિલા ત્યારથી મને એવું લાગ્યું કે અહીંયા એક વિલા બુક કરી લેવું જોઈએ કે બહુ શાંત વિસ્તાર, સરળ વિસ્તાર, ઠંડો વિસ્તાર, પાછળ હિલ, ઓર્ગેનિક ફૂડ, બધું તમને અહીંયા શાકભાજી ઓર્ગેનિક, ફ્રૂટ ઓર્ગેનિક, સરસ મજાનું સ્વિમિંગ પૂલ છે, સરસ મજાનું જીમ છે અને એક સુંદર વાતાવરણની અંદર સુંદરતાને શાંતિથી તમારે જો રહેવું હોય તો બહુ સરસ જગ્યા છે। सोच रहा हूँ मैं एक विला बुक करूँ। मैं 2-4 दिन में एक विला में बुक करने का सोचता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ का व्यूज बहुत अच्छा लगा। Best days of my life. All I can say, you should enjoy it.